Assalamu alaikum, dear student. Now we are going to discuss the uh, characteristic of vector product. Vector product क्या था? When a two vector multiplied a and b and the result in which we got is a vector quantity is also called vector product या cross product. One of the example was torque. Torque is equal to r cross f. So आपके पास है rf sine of theta into n is the normal unit vector, rf is the, so when you will say torque, answer is 30 newton meter clockwise or anti clockwise. आपको मैं बताता चलूँ बेटा, फॉर एग्जांपल ये दरवाजे को, तो आप कहेंगे सर क्या दरवाजे को बंद करूं या ओपन करूं? इसका मतलब है आप टार्क लगा रहे हैं, लेकिन आपको मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। डायरेक्शन ज़रूर बताऊंगा, यानी क्लोज डोर ओपन द डोर। सो इट मीन्स अ वेक्टर आर क्रॉस एफ, इसका मतलब है कि मैं क्लॉक करूं या एंटी क्लॉकवाइज करूं। Therefore it gives the direction, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, and we are saying cross product. There is another example which is called Q is equal to V cross B, and that is called magnetic force, Fm, magnetic force. A lot of examples are there, but these are there is another Ponting theorem which is higher a little bit. Now we are going to discuss the properties of the characteristic of the vector product. Number one property, not a commutative, not a commute, because A cross B is not is equal to B cross A. Why? आप एक नट खोलना चाहते हैं तो एक तरफ रोटेशन देते हैं, दूसरी तरफ दे दे तो वो वापस आता है. सो इट मीन्स 180 डायरेक्शन. इफ लेट्स से दिस इज अ nail and this is a nut, so if you rotate this one into this direction, so it moves up, let's say, and when you move in this direction it's going down. So there is a huge difference up and down. Therefore A cross B not is equal to B cross A, yani R cross F not is equal to F cross R. There is a clockwise torque negative and anti-clockwise torque is positive. Why we are saying? Because of this not a commutative property. Number two, if a two vector are at right angle, orthogonality property, orthogonal property, we are saying if a two vector are at right angles, we are saying the two vector are orthogonal. So orthogonal means, let's say this is a vector A and this is B and the angle is 90. So A cross B is equal to AB sine of theta into n. The sine 90 is equal to 1. So A cross B is equal to AB. It means when a two vector are at right angle, it will give the maximum values. For example, आप टार्क को देखें 90 एंगल से फोर्स लगाते हैं तो इजीली हम खोल सकते हैं. Number three, if a two vector parallel to each other, so whenever parallel to each other, there means theta is equal to 0. So A cross B is equal to AB sine of theta. So sine 0 is equal to 0. So A cross B is equal to 0. But this means that if a two vector are parallel, their product will be 0. Number four, if the two vector are anti-parallel, their angle there will be also A cross B will be equal to 0, because sine 180 is also called, sine 180 is called 0. This is the another property of the vector. Now we are saying we are going to discuss the another property, and the property number 5. As in vector product, scalar product, we are saying I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1. But here we are saying I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to 0. And we are saying I cross J is equal to K, J cross K is equal to I cross J K, J cross I is equal to I, and K cross I is equal to J, Better look at that. I cross J, K, J cross K, I,
and k cross I j. But when you say that j cross I is equal to minus k, if you say k cross j is equal to minus I, and if you say I cross k is equal to minus j. Why? Because we have studied a cross b is not is equal to b cross a. Now why it is I cross I along 0? I cross I means x-axis, and x-axis I cross I both along x-axis parallel, and whenever they are parallel it means sine 0 is equal to 0. So I cross I, j cross j, and k cross k is equal to 0. However, I cross j is equal to k. किस तरह? For example, I cross j is equal to I j sine of theta into n. Look at that beta. I cross j is equal to I into j, 1 into sine of sine I along x, j along y. So the angle between I and j is 90. Sine 90 is equal to 1. N is the normal unit vector, means show the direction, and this is direction along k. किस तरह बेटा? अगर आपको मैं बताता चलूँ, एक दरवाजे का एक x है, एक y है और एक z है, इसको आसानी से आपको समझाने के लिए मुझे इस बुक का सहारा लेना पड़ेगा. लेट से ये बुक है आपके पास कुछ इस किस्म का. बेटा मैंने इसको इस तरह ओपन किया ताकि आपको पता 90 एंगल के साथ. ये x ले लूँ मैं, ये x एक्सिस है, ये y है, ये y, और एक नीचे है जो z है. अगर मैं ज़मीन से मेजर करूं, यानी यहाँ से देखे, तो ये x ले ले, ये y ले ले और ये z ले ले, तो ये x I x j, तो मतलब I क्रॉस j तो ऊपर आता है k. लेकिन अगर आप करें j क्रॉस k तो नीचे आता है. देयरफॉर मैं इसको जो है, अगर आप एक डोर की या एक कमरे की एग्जांपल ले लें, एक कमरे की एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताए दे सकता हूँ. लेट आई वांट टू गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल. लुक एट दैट बेटा, दिस इज अ रूम वर्टेक्स, एक रूम का एक कोना है. अब आप ज़रा देखें, इसको आप x ले लें, इसको आप y ले लें और ऊपर जो है z ले लें. अब ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये वाला y हो गया. अब x I मल्टीप्लाइड बाई j, यानी यहाँ से शुरू होता है I मल्टीप्लाइड बाई I क्रॉस j. तो आपको पता है कि इसका वेक्टर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये क्या होगा, ऊपर I आता है. लेकिन अगर आप करें j क्रॉस I तो ये तो बिल्कुल नीचे जा रहा है. देयरफॉर वी आर सेइंग माइनस. So that was I cross j is equal to k cross I. And another word we are saying, I want to make another simple method to you. Let's say this is I, this is j, and this is j, and this is called k. I cross let's say I clockwise, anti-clockwise. I cross j, तो आपको उसी डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, k मिल रहा है. सो I क्रॉस, इधर देखिए मेरे फिंगर को, I क्रॉस j इज इक्वल टू k. अगर आप कर लें j क्रॉस k, यानी j क्रॉस k, तो उसी डायरेक्शन में मेरा पेन जा रहा है I. अगर आप कर लें I क्रॉस k क्रॉस I, यानी k क्रॉस I, तो उसी डायरेक्शन में j. इफ़ यू से j क्रॉस I, यानी मीन्स j क्रॉस I, तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो पहले मैं इस डायरेक्शन में, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस आई एम गोइंग अपोजिट, टू माइनस k. So therefore we are saying a cross b is not is equal to b cross a. Now another example, the vector in component form, number 6. Let's say there is a vector a, and the vector a is equal to ax plus axi ay j into azk, and there is b vector bxi
BYJ and BZK. आपसे कोई पूछे find the A cross B. There is another you know that two method, the same method, this multiplied by this and this multiplied by this, but there is another method in mathematics you have studied. I want to make determinant method. A cross B is equal to, I want to say, let's say this is a very easy one. First I J K. The first year student of mathematics, they will study in chapter echelon forms. वहाँ पे वो पढ़ेंगे, but for medical student it will be little bit different, but not so much because you have done already in 10 mathematics as well. So I J K A, so it means AX, AY, AZ. B yani BX, BY, BZ. Now better solution. This is A cross B is equal to. Now first of all you will take I positive plus I. इस तरह ले लें, ये इस तरह ले लें. पहला रो पहला कॉलम 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3. तो ये एक्चुअली हम निकालते हैं माइनस आई का मतलब है 1 + 1 2, तो ये प्लस आता है, देयरफॉर मैंने प्लस लिखा. तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दे तो आपके पास ये रह जाएगा AY AZ BY BZ. इधर हो जाएगा -j बिकॉज 1 + 2 ये 3 आता है, तो -3 का किसी का पावर माइनस ऑड हो तो उसी तरह माइनस आता है, सो -j हो जाएगा. इसी तरह डिटर्मिनेंट लगा लें. अब इसका ये रो और ये छोड़ दे तो हो जाएगा AX एंड BZ, AX BZ और BZ सॉरी, और ये हो जाएगा AZ BX एंड प्लस K निकल जाएगा, वो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास ये वाला और ये वाला रह जाएगा. बाकी ये पुट करेंगे AX इंटू AY BX इंटू BY. अब आपके पास हो जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू आपके पास ये I इंटू ये हो जाएगा AY BZ माइनस दिस वन माइनस ये हो जाएगा BY इंटू AZ माइनस J हो जाएगा. इसी तरह ये वाला माइनस ये वाला, ये आप इस तरह लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकता, आप ट्राई करें बेटा. इस तरह K. अब आप इसको दिस वन AX BY माइनस AY BX. सो आगे पीछे ये आगे लिखे ये पीछे लिखे, नो प्रॉब्लम. AX BX नो प्रॉब्लम बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो ये इसका कोई वो जो है ये स्केलर आपको देता है ऑलरेडी, उसके साथ वेक्टर यूनिट वेक्टर बाहर लिखा होता है. सो देयरफॉर नाउ इफ़ यू हैव अ टू वेक्टर A इज इक्वल टू I + 2J + 3K एंड देयर इज अनदर वेक्टर इज this is 2I + 3J + 1K multiplied this one, so easily you can say there will be IJK and for AX means 1 इधर 1 है, 1 इधर 2 है और इधर आपका हो जाएगा 3 और इसकी जगह हो जाएगा 2, इसकी जगह हो जाएगा 3, इसकी जगह हो जाएगा 1. तो यहाँ पे पुट कर ले आपको जो है आई आंसर हमेशा के लिए I + J + K में आएगा, क्योंकि आपको पता है ये वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको जो है आंसर डायरेक्शन में मिलता है. that is the end of the vector products, scalar as well as vector. Okay, assalamu alaikum once again students, please see and watch the video with the most attention and share with the friends as well. Okay, assalamu alaikum.